हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास से पढ़ाई थिला देखो, प्रीवियस क्लास से पढ़ाई थिला यूनिट ऑफ चार्ज, देन पढ़ाई थिला देखो रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टार कूलम। ओके, देन आज हमें पढ़िबा गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो समझते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बा देखो मैं कहि परबा देखो net force on a charge due to number of discrete charges देखो पिला माने net force on a charge due to number of discrete charges. Okay, so first we have to know the definition of कहार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रो देखो स्टेटमेंट कोन होची देखो it states that all the charges when placed near each other behave. It states that all the charges when placed near each other behaves independent of each other, and the net force on one charge due to all other charges is equal to vector sum of all the forces. Produced by them at the first. This is the definition. देखो, it states that all the charges when placed near each other behaves independent of each other, and the net force on one charge due to all other charges is equal to vector sum of all the forces produced by them at the first. Okay, this is the definition of superposition principle. Okay, then do the diagram करो, डायग्राम कर दिया समझते। देखो डायग्राम देखो, suppose this is x axis. Okay, this is x axis, suppose this is y axis, suppose this is z axis. देखो very important, origin को देखो एठी हमें q1 चार्ज नहीं वाला, q1 चार्ज एठी हमें q1 चार्ज नेबा, q1 पाई फोर्स केते सपोज f1 वेक्टर ओरिजिन उठे जॉइन कर दियो q1 पर्यंत। ओके, q1 चार्ज देखो पोजीशन वेक्टर केते सपोज r1 वेक्टर। ओके, देन इटे q2 को रखो, q2 चार्ज ताको जॉइन करो, q2 पाई फोर्स केते हेबो दैट इज f12 वेक्टर से बोले एटी q3 चार्ज नहीं जाओ, एटी q3 चार्ज ताको जॉइन करो। देखो q3 पाई फोर्स सब देखो, f13 फैक्टर से एटी q4 रखो, q4 पाई फोर्स सब देखो सपोज f14 फैक्टर। ओके, q4 को जॉइन करो। देखो origin O ठारो q1 रो डिस्टेंस केते r1 फैक्टर, देन origin O ठारो q2 डिस्टेंस केते हो q2 डिस्टेंस दैट इज r2 फैक्टर, देन origin O ठारो q3 डिस्टेंस केते हो q3 डिस्टेंस दैट इज r3 फैक्टर, then origin O ठारो
Q4 डिस्टेंस केते दैट इज R4 फैक्टर ओके तो देखो एठी Q1 पाई फोर्स होची F1 फैक्टर देन Q2 पाई फोर्स होची F12 फैक्टर Q3 पाई फोर्स हला F13 फैक्टर Q4 पाई फोर्स नै देखो F14 फैक्टर ओके एटा कोन दैट इज configuration of all the charges configuration of all the charges in free space okay then what is F12 vector F12 vector মানে হচ্ছে দেখো force acting on charge Q1 due to Q2 then according to Coulomb's law अनुसार देखो according to Coulomb's law F12 vector মানে কোন ফর্মুলা that is 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 by R12 square distance देखो R12 square into R21 cap give equation number 1 similarly F13 vector कोन हो F13 vector 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q3 by R13 square into R31 cap give equation number 2 से भैया F14 vector वैल्यू बाहर करो F14 vector होची देखो 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q4 by R14 whole square into R41 cap give equation number 3 okay then let's move on to F12 vector F13 vector F14 vector then what is F vector A vector মানে হচ্ছে দেখো net force on charge Q1 due to all other charges in the configuration okay F vector মানে কোন net force on charge Q1 due to all other charges okay then according to superposition principle কোন ফর্মুলা according to superposition principle দেখো ফর্মুলা হচ্ছে F vector is equal to F12 factor plus F13 factor plus F14 factor plus टोटल दे दियो ओके दे दियो देन এটি কোন হবে দেখো এটা ইকুয়েশন নম্বর 4 দেই দিও লিখিব using equation 1 2 and 3 in equation number 4 we get put कर दियो put कला पर कोन होची देखो that is put कर दियो एटी थ्योरी कोन आबो देखो एटी थ्योरी की हिबो देखो ए डायग्राम रो थ्योरी कोन let us consider a configuration of charges let us consider a configuration GURETION है let us consider a configuration of charges कौन चार्जेस আছে देखो Q1, Q2, Q3, Q4 आउ भी रही पारिबो टोटल दे दियो at position vector कोन कोन Q1 पाई अछि देखो R1 वेक्टर Q2 पाई R2 वेक्टर Q3 पाई R3 वेक्टर Q4 पाई R4 वेक्टर टोटल दे दियो हैला let us consider a configuration of charges Q1 Q2 Q3 Q4 at position vector R1 vector R2 vector R3 vector R4 এটা डायग्राम কৰি সারলা পরে এটা লিখিব ওকে then এটি পুট করো that is
F vector is equal to equation 1 কোন আসলে F12 vector ফর্মুলা দেখো 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r12 square into r21 cap plus F13 vector কোন ছিল দেখো F13 vector ছিল দেখো 1 by 4 pi epsilon naught q1 q3 by r13 square r31 cap. Okay, then F14 vector value put karo 1 by 4 by epsilon naught q1 q4 by r14 square into r41 cap plot dot de diyo देखो एठी केते कॉमन आसीबो एठी कॉमन आसीबो देखो कॉमन आसीबो 1 by 4 by epsilon कॉमन आसीबो देखो 1 by 4 by epsilon कॉमन आसीबो देखो कोन रहिला ओनली that is q1 q2 by r10 square into r21 cap then q1 q3 by r10 square r31 cap plus q1 q4 by r14 square r41 cap plus dot दे दियो इक्वेशन दे दियो गिव इक्वेशन नंबर के 4 जेतिला माने 5 এটা কোন এটা হচ্ছে তোমার नेट फोर्स ऑन चार्ज q1 due to all other charges then देखिबा हमें देखो similarly net force on charge q1 sorry net force on charge q2 similarly net force on charge q2 due to all other charges net force similarly net force on charge q2 due to all other charges कोन हम तो एटा देखि हम लिख पारिबा that is f factor is equal to हबो देखो 1 by 4 by epsilon कोन हबो q2 पाई that is q2 into q1 by r21 whole square into r12 cap देखो प्लस से बढ़िया एटा कोन हबो q2 into q3 by r23 whole square into r32 cap से बढ़िया देखो प्लस q2 into q4 divided by r24 square into r42 cap. Okay, give equation number 6. This is all about superposition principle. Then हमें देखिबा देखो then हमें पढ़िबा source charge very very important source charge माने कोन source charge होची देखो it is the charge body whose electrostatic effect at a point away from it is to be analyzed देखो it is the charge body whose electrostatic effect at a point away from it is to be analyzed. It is denoted by capital Q or Q dash देखो it is denoted by capital Q or Q dash. Then test charge माने कोन देखो test charge माने होची देखो to determine the effect of charge distribution at a point at any point we have to place
we have to place a small charge. We have to place a small charge. We have to place a small charge. That is called test charge. Okay. देखिए पिला माने test charge माने कौन? To determine the effect of charge distribution at any point, we have to determine or we have to place a small charge. To determine the effect of charge distribution at any point, we have to place a small charge called test charge. Okay. It is denoted by small q. Okay. Then source point. Source point माने कौन देखो? Source point होची देखो. It is a point where source charge is located. Source charge is located. मन रखो पिला माने. Source point माने कौन? It is a point where source charge is located. से बढ़िया. What is observation point? What is observation point माने कौन देखो? It is a point where test charge is located. Test charge is located. Okay. It is a point where test charge is located. Okay students, एतिके थाओ. नेक्स्ट क्लास से पढ़िबा. जदि ए वीडियो जदि भल लागुछ माने लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो.